So students, we are moving for the fourth law of chemical combination, which is Gay-Lussac's law of gaseous volume. So in this law, you can see that when gases combined or when gases are produced, you can see the example, two gases, hydrogen and oxygen, they are combining and they are producing. Okay, so when gases combine or they are produced in a chemical reaction, then if you take the ratio of their volume, like the volume of reactants as well as the product, इसका अगर आप ratio लोगे, then it will be a very simple ratio of whole numbers. Okay, one necessary condition is this all gases must be at the same temperature and pressure. ऐसा नहीं कि आपने ऑक्सीजन गैस रूम टेम्परेचर पे लिया है, हाइड्रोजन गैस आपने रूम टेम्परेचर नहीं सॉलिडिफाइड फॉर्म में कुछ लोअर टेम्परेचर पे लिया है. ओके, नॉट अलाउड. ऑल गैसेस शुड बी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो तब जाके क्या होगा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस ऑल थ्री रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट आपको सिंपल होल नंबर्स मिलेगा. So let's take this with the help of two examples, two chemical reaction. So first chemical reaction, पहले balance करते हैं. So here you can see, in order to balance this, मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, and hydrogen 4 हो गया, so यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा. So this coefficients is very important. इसी से आपको कितना वॉल्यूम लिया है समझेगा. Let's say I have taken 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मैंने उसको 100 कंसीडर किया. तो हाइड्रोजन कितना लिया होगा, उसका कोएफिशिएंट 2 है, सो दिस विल बी डेफिनेटली डबल. क्लियर? इधर H2O का कोएफिशिएंट क्या है, इट इज 2, सो अगेन यहां पर भी डबल होगा. ठीक है, सो नाउ व्हेन यू टेक द रेशियो ऑफ दिस वॉल्यूम्स, व्हाट यू विल गेट, you will get 2:1:2. ठीक है, let's take one more example, which is nitrogen plus hydrogen forms ammonia. First of all, ये balance नहीं है, इसको balance कर देते हैं. So here we have 2 nitrogen, so यहाँ पर 2 तो देना ही पड़ेगा, but hydrogen हो गया 6 on the right hand side, so I will give 3 over here. So this is how the reaction is balanced. Now balancing is very important in this law because उसी से आपको वॉल्यूम का वैल्यू मिलेगा. Like nitrogen, I have taken 100 ml. Okay, उसका कोएफिशिएंट 1 है, so 100 ml. So that is how हाइड्रोजन का कितना लिया होगा, उसका कोएफिशिएंट 3 है, so this must be taken how much, 300 ml. And अमोनिया का कोएफिशिएंट 2, ठीक है, so this must be equal to 200 ml. So when you take the ratio of this volume, you can observe ये आपको मिलेगा 1:3:2. So simple ratio by volume. This is what is Gay-Lussac law of gaseous volume. So students, let's move on to the last law of chemical combination, which is Avogadros Law. School section में Avogadro number पढ़ा होगा. Okay, if you remember, the Avogadro number was 6.022 into 10⁻23. So big number. ये actually क्या है? This is the number of atoms or the molecules which are present in 1 mole of a gas. Correct? So mole का concept तो हम डिटेल में पढ़ नहीं पा रहे. But before that, Avogadro law में वो मोल का कुछ concept use हो जाएगा. Okay? So what is the law? Equal volume of all gases contains equal number of molecules. Again the condition is the same. वो सारे gases होने चाहिए same temperature and pressure. Clear? So I have already justified that oxygen अगर room temperature पे लिया है, तो हाइड्रोजन भी रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए. That means all gases should be at same temperature and pressure. Okay? तब जाके आपको gases का volume and number of molecules का relation मिलेगा.
So let's try to understand this with the help of example. Let's say I have taken oxygen gas at room temperature, okay, and 1 atmospheric pressure. यहाँ का जो environmental pressure होता है that is called as 1 atmosphere. So oxygen gas I have taken and उसका volume is equal to 22.4 decimeter cube. ठीक है? So oxygen gas has occupied 22.4 decimeter cube of volume. तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? It will have this many number of molecules. So यहाँ पर मैंने एरो दे दिया. चलो नेक्स्ट, अगर मैंने हाइड्रोजन गैस लिया है सेम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर as well as same atmospheric pressure and it is also occupying 22.4 decimeter cube. उसने भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो उसमें भी कितने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे? It will have same number of atoms as or molecules. Clear? So अगर गैस आप चेंज कर रहे हो बट उसका वॉल्यूम अगर सेम है, like you can see गैस चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बट वॉल्यूम आपने सेम रखा है 22.4, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज. वन लास्ट, लेट्स से आई हैव टेकन नाइट्रोजन गैस, it is also occupying this much decimeter cube of volume, तो उसमें भी कितना atoms या molecules होगा? Yes, this many atoms, 6.022 into 10 raised to 23, which is also called as Avogadros number. Now one more thing I like to add over here कि अगर मैंने for example ऑक्सीजन का वॉल्यूम डबल कर दिया, I have made it 44.8, तो अभी मॉलिक्यूल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम डबल करने के लिए आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएगा. ओके, मींस इफ यू डबल द वॉल्यूम, number of molecules inside that volume will also get doubled. More number of molecules will be present inside that 44.8 decimeter cube of volume. ठीक है? So इससे हमको एक और स्टेटमेंट मिलता है Avogadros Law का, which is volume is directly proportional to number of molecules. ठीक है? देखो फिर से, volume is directly proportional to number of molecules. जैसे ऑक्सीजन के केस में मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, डबल किया, तो देखा होगा आपने मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाते हैं. This will become how much? 12.044. क्लियर? अगर मैंने ये ट्रिपल कर दिया होता ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो ये भी ट्रिपल हो जाता 18.066. करेक्ट? So I hope you understood this Avogadros law, which have this statement, and in simplified form you can understand by this formula also. Clear? So that is how we complete all the 5 laws of chemical combination. So let's move on to the next topic, which is Dalton's atomic theory, which was proposed in the year 1808. Now long back there was a person named Rishi Kannad, obviously Indian origin का नाम लग रहा है, उसने एक टर्म दिया था which was called as परमाणु. Okay, so हम लोग बोलते हैं ना एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, करेक्ट? सो वही से ये एटम का वर्ड आया था परमाणु. सो ये एटम जो वर्ड है बहुत पहले ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था, बट लेटर ऑन लाइक डाल्टन के टाइम पे इसको फाइनली अप्रूवल मिला. Okay, there are lot many stuff which are of Indian origin, but उसको अप्रूवल देते हैं अमेरिकन ओरिजिन, ब्रिटेन ओरिजिन. ठीक है, जब वो लोग इसको प्रूव करते हैं. Okay, so what did Dalton say in 1808? He said that matter, आपको पता मैटर क्या है? Everything around us is matter. उसके छोटे छोटे particles, tiny particles are called as atoms, and they are indivisible और डिवाइड नहीं हो सकते. बट वी नो कि एटम के अंदर भी और भी पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं हम उसको, विच आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, बट स्टिल 1808 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब नहीं आया था. सो एटम्स वाज द स्मॉलेस्ट.
नाउ व्हाट इज सेइंग कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, तो उसके सारे एटम्स जो भी होंगे दे विल ऑल हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द मास। ठीक है, सो ऑक्सीजन बोला मतलब मास फिक्स है। यू नो द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 60। ओके, नाउ दिस सेइंग atoms of different elements differ in mass, obviously करेक्ट है। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट कंसीडर किया तो उसका एटॉमिक मास क्या है 1, ऑक्सीजन कंसीडर किया तो 16, नाइट्रोजन कंसीडर किया तो 14, कार्बन कंसीडर किया तो 12। सो डिफरेंट एलिमेंट्स विल डिफर इन मास। ठीक है, ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं देखो, उसका भी डेफिनेशन, कंपाउंड का ही ये एक और डेफिनेशन है। When different elements combine in a fixed ratio, that is how compounds are formed. Whereas mixture क्या होता है? No fixed ratio. Any ratio they will combine in definite proportion. Correct? But compound है तो definite ratio में combine होता है atoms of different elements. Clear? Last point. Chemical reaction जब होता है, there is only reorganization of atoms. If you have look at any of the chemical reaction, उसमें क्या होता है, सिर्फ शफलिंग होता है एटम्स का इधर उधर, ये एटम इसके साथ कंबाइन होता है, वो एटम इसके साथ कंबाइन होता है, एंड दैट इज आवर ओनली रीशफलिंग और रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि एटम कोई नया क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, जैसे इनिशियली मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया है AgNO3, ठीक है, एंड ये बाद में जाकर AgCl बना है, तो क्लोरीन कहीं से क्रिएट नहीं हुआ है, ये मिला किधर से है, ये NaCl में से ही मिला है। करेक्ट है कि नहीं? सो सिल्वर एंड क्लोरीन दे रीऑर्गेनाइज एंड फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, एंड दूसरा पार्ट भी क्या होगा इधर, ऑब्वियसली NaNO3। सो सोडियम एज वेल एज नाइट्रेट, इनका भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। सो दैट इज हाउ केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है, atoms are neither created nor destroyed. So that is all about Dalton's atomic theory. So students, let's go for atomic mass, simple concepts of chemistry we are dealing with right now. Atomic mass पढ़ेंगे, उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, फिर मोलार मास पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक मास। बहुत सिंपल है, इट इज मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास कितना होता है? ओके, बट यू नो एटम इज रियली स्मॉल, तो उसका मास भी एकदम छोटा ही होगा। सो उसके मास के लिए किलोग्राम इज अ टू बिग यूनिट, तो ग्राम नो, दैट इज आल्सो टू बिग। तो क्या मिलीग्राम? दैट इज आल्सो टू बिग। तो क्या, for that we use the unit called as AMU. Okay, it is atomic mass unit. Like hydrogen is the smallest atom, correct? So उसका atomic mass 1 AMU लिखा जाता है। Okay, carbon has the mass 12, nitrogen has 14, oxygen has 16. So these are the atomic masses of this different atoms. ठीक है, अब AMU को define कैसे करना है? AMU का definition you can see on the board, but I like to describe its definition by taking this word, this line. So carbon एक बहुत important element है chemistry में. You know organic chemistry, मतलब carbon and उसके compound. So कार्बन को ही बेस बना के उसका डेफिनेशन बनाया गया है। ओके, सो यू कैन सी द डेफिनेशन। AMU is defined as mass equal to 1/12 of the mass of one carbon atom. इसका मतलब क्या है? बहुत इजी है। 1 AMU is equal to 1/12 लिखा है, 1/12 हो गया, into the atomic mass of carbon, correct? So you know 1/12 into carbon का atomic mass कितना है? 12. So this got cancelled and finally आपको 1 ही मिल गया। समझ में आया? So now you must be thinking कि हाइड्रोजन से भी तो डिफाइन कर सकते हैं। 1 AMU is defined as the mass equal to the mass of hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है। But that is what I am telling you. Carbon is the main element of
ऑफ केमिस्ट्री, इसलिए ये डेफिनेशन कार्बन के टर्म्स में बनाया गया है. ओके, देयर इज वन मोर यूनिट इंस्टेड ऑफ एएमयू, जो कि अभी हमने पढ़ा था. साइंटिस्ट का नाम डाल्टन. करेक्ट. सो डाल्टन ने जो एटॉमिक थियरी प्रपोज किया, उसके सम्मान में एक यूनिट उसको भी दे दिया है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ एएमयू यू कैन राइट डाल्टन आल्सो, एंड डाल्टन इज डिनोटेड बाय ओनली यू. ओके, ओनली यू. सो हाइड्रोजन का आप 1 यू लिखोगे तो भी करेक्ट है, 1 डाल्टन. कार्बन के बदले आप 12 यू भी लिख सकते हो. ओके, सो दैट इज हाउ this completes the topic of atomic mass.